Hello. After doing some videos, around 16, 17 videos on grammar, now just for a change, I started doing a few videos on removing your confusion about pair of words homophones. So 80% students, aspirants, and other users of English language get confused with these pair of words. So this today take, for example, alter. Alter, alter, alter. So this alter is change, and this alter, altar. So there is no much difference in spelling, in sound, in pronunciation, in phones. Still, the meaning and the spelling changes. So this is alter and this is altar. More than 80% users of English confuse students, aspirants for various competitive examinations, professionals. So it's very pertinent, important for you to know. So that's important. E, A, here E, here A. Alter, change. For example, use in a sentence, true love does not alter. Means true love does not change. It's not something to shift today, here, tomorrow. That's not true love, essence of true love. So true love does not alter, does not change. Now this alter, this is place of offerings. Altar, altar, place of offerings. Say the goat and chickens were taken to altar. That's it. Take some more example. Say confident, that often confuse. Confident and confident. Notice the difference. Here only medial position vowel E, here A. Here also E and here A. And the meaning changes. The usage changes. Still, most people are confused. Majority of people. This confident means having confidence. Having confidence. Having confidence, faith, trust. For example, she is confident of success. Confident of सक्सेस, मतलब उसको कामयाबी की, सफलता की, सक्सेस की पूरी उम्मीद है, भरोसा है, पूरा आत्मविश्वास, पूरा अविश्वास है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगी. Similarly, here this is confident. E changes into A. The meaning undergoes sea change, big change. बहुत दोनों में अर्थ में, मीनिंग में बहुत डिफरेंस है. स्पेलिंग भले साउंड ठीक हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ये कॉन्फिडेंट का मतलब, इसका कहीं से कॉन्फिडेंस से लेना देना नहीं. दिस मीन्स ट्रस्टवर्दी.
मतलब भरोसेमंद, भरोसे के लायक। someone to whom secret can be shared, जिसको राजदार कहते हैं, भरोसेमंद कहते हैं, वो मीनिंग है इसका कॉन्फिडेंट का, DANT होने से, जिससे राज की बात शेयर की जाए। तो वो जो सीक्रेट्स, जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को जिससे शेयर किया जाए। टू गेट ए confident today is very difficult. To get a confident today is very difficult means आज के ज़माने में, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में वैल्यूज हैव कोलैप्स्ड, हैव गॉन डाउन। तो ऐसा आदमी बहुत डिफ़िकल्ट है मिलना, मुश्किल है मिलना, जिस पे आप भरोसा कर सको, जिससे आप राज की बात शेयर कर सको, जिससे ऑल कॉन्फिडेंशियल मैटर्स शेयर करो। क्योंकि ऑफन इवन फ्रेंड्स डिच यू, फ्रेंड्स में भी एक दो ही ऐसा होगा जो आपकी राज की बात को, आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रख सके। सो ये आज के क्लास, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारे ये वीडियो आप सबको पसंद आएंगे और आप सीखोगे, कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी इस अल्टार की, कॉन्फिडेंट की। सो सम मोर वीडियोस ऑन दिस टू रिमूव कन्फ्यूजन्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, फिर आप डे टू डे लाइफ में जब यूज़ करते हो एज प्रोफेशनल्स, एज स्टूडेंट्स, एज एस्पिरेंट्स, तो इसके लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है वोकैबुलरी के लिए।